Hello everyone, welcome to Nyaya Academy of Wisdom. I hope you liked the last video in which we started with concepts and question series on GST, that is Goods and Service Tax. प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी से रिलेटेड हिस्ट्री को पढ़ा था और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमने ये डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करके आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज जीएसटी एंड प्री एंड पोस्ट सिनेरियो ऑफ जीएसटी। जीएसटी एक रेवोल्यूशनरी जर्नी है इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए। प्री जीएसटी द थिंग्स वर डिफरेंट, पोस्ट जीएसटी जीएसटी के आने के बाद एक यूनिफाइड टैक्स लॉ बन गया है कंट्री के अंदर। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं जीएसटी के आने के बाद, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज पे लगता है। जैसे कि अगर आप बाहर जाते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विसेज को अवेल करेंगे तो आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। पहले आप पे करते थे वैट, सर्विस टैक्स, अब आप पे करते हो जीएसटी। जीएसटी जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको जीएसटी ने आज रिप्लेस कर दिया है ताकि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि हर वैल्यू एडिशन पे लगेगा, चाहे इंपोर्ट्स हो, चाहे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे, होलसेलर रिटेलर्स को दे, रिटेलर्स कंज्यूमर्स को दे। टैक्स सिर्फ एक ही लगेगा, वो क्या है? जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है फॉर द एंटायर कंट्री। Let's discuss pre and post scenario of GST, and in that let's start from first point, from multiple indirect tax law to unified law. Before GST, if we had different taxes for different transaction, for example, if I talk about value addition, we have a tax VAT. If there is a final sale to consumer, we have a tax sales tax. If there is a manufacturing performed in India, we have excise duty. If there is any imports into India, we have custom duty. If any services are provided, we had service tax. These all were the indirect taxes before GST. Now, for every such transaction, we have one law, that is GST. GST is a single tax policy for goods and services. Either it is from manufacturer to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to customer, we will be having one word, that is GST. हमें बहुत सारे एक्ट्स अब नहीं पढ़ने, अब हमें सिर्फ GST पढ़ना है. So it is a transformation from multiple indirect tax law to one unified law. Then we have second point, from multiple terms of transaction to single term. For example, for VAT, we had a value addition. Sales, we have final sale. Excise duty, we have manufacturing. Custom duty, we have import. For service tax, we have services provided. Now we have just one word, that is supply. All these terms are replaced with one word, that is supply. We will treat every transaction in GST as supply. If there is a transfer of goods from wholesaler to retailer, we will say that there was a supply of goods from wholesaler to retailer, and therefore GST will be applied. Then third part, we have from point of supply to point of consumption. Before GST, there was a part when VAT and service tax used to apply, जहाँ पे supply हुआ है. Let's say if the supply is from wholesaler to retailer, wholesaler was the point of supply. But wholesaler was the point जहाँ पे tax लगेगा. But GST is a destination based. It's a point of consumption. जहाँ पे consume हुआ है, actually वहाँ पे tax लगेगा. So there is a transfer from supply to point of consumption. So how the questions come in the paper? GST is slated to replace what kind of taxes? Service tax, central excise tax, entertainment tax, all the above. So service tax is also an indirect tax. Central excise, indirect tax. Entertainment tax, indirect tax. So actually GST have replaced
all the indirect taxes, so answer will be D part. Then we have GST is a consumption of goods and service tax based on dividend, destiny, duration, destination. It's a destination based tax, point of consumption. So answer will be D. Thank you so much. We will come with more videos on GST like supply, time of supply, place of supply and another topics. Kindly like and subscribe Nyay Academy for more videos and to get updated with more videos on GST. Thank you so much. Have a nice day.